Good morning, students. I have given you of class 2. I had given you lesson 19, and now I think let me do one more exercise. That is the comprehension part, that is lesson 25. Now, this is a story, okay? Now, this is a story, comprehension part. You have to read this passage and you have to give the answers to these questions. Now, let's do it. I think I had given you all in the second unit. Do it now. Reena is in bed at night. It is very quiet and dark. Now, this girl, Reena, she's in bed. She's sleeping on her bed. And it is very क्वाइट क्वाइट मीन्स शांत चारों तरफ शांति है और अंधकार है और रीना अपने बिस्तर पे है रीना নিজে বিছানা উপরে আছে আর চারদিকে খুব শান্ত और अंधकार আছে रीना इज अफ्रेड ऑफ द डार्क रीना किंतु अंधकार के भय पाए ठीक है रीना अंधेरे में बहुत डरती है रीना की भय पाए অন্ধকার কে ভয় পায় ওকে রিনা কোথায় আছে রিনা ইজ ইন বেড অ্যাট নাইট রিনা বিছনা উপরে আছে ঠিক है নাও suddenly she hears a strange noise outside her window hoot hoot now she goes and sees outside her window there's a sound coming hoot hoot so she gets up and goes and sees উঠে গিয়ে জানলার কাছে দেখছে একটা আওয়াজ হুট হুট করে আসছে खिड़की के पास खड़ी होकर देख रही है एक आवाज़ आ रहा है हूट हूट करके शी लुक्स आउटसाइड वो बाहर देखती है शी सीज टू बिग येलो आइज व्हाट इज शी सीइंग टू बिग येलो आइज अंधकार मध्य शुधु चोखटा चकचक करे तो आउलेर चोख owl's eyes they shine in the dark so she can only see the eyes okay now two big yellow eyes mama mama she shouts চিৎকার করে মা মা করে ডাকছে Her mother comes into the room. What is it, Reena? She asks. Mother এসে বলে কি হলো রিনা There is a monster outside my window. भूत আছে monster means भूत बाहर है Reena cries. Reena কাঁদছে Her mother looks too. Then she laughs. माँ भी देखছে জানলা থেকে और হাসছে रीना क्या करती है चिल्लाने लगती है माँ माँ करके फिर माँ अंदर आती है और रीना फिर बोलती है माँ देखो खिड़की के बाहर तो माँ खिड़की के बाहर देखती है और देखकर हंसती है इट्स अ बेबी आउल शी सेस वो बोलेছে এটা ছোট্ট ये व्हाट टू से फॉर आउल उल्लू उल्लू जो है वो ठीक है इट्स अ बेबी आउल शी सेस आई थिंक इट जस्ट वांट्स टू से हेलो वो तुम्हाके जस्ट हेलो बोलते चाहे owl you know what's an owl I don't know in Bengali what do you say for owl I don't know what do you say see you know what is this owl this is owl okay so this owl is sitting here so she says Reena her mother says she only wants to say হ্যালো টু ইউ ও তোমাকে হ্যালো বলছে হুট হুট বলে হ্যালো বলছে রিনা লুকস এট দ্য ফ্লাফি ব্রাউন আউল তারপরে যখন বললো এটা दिस इज़ अ आउल ওখানে একটা आउल বসে আছে वहाँ पे एक उल्लू बैठा है तब वो जाके देखती है और उसका डर ख़त्म होता है ওর ভয়টা তারপরে শেষ হলো কেন দেখলো কি হ্যাঁ ওখানে একটা আউল বসে আছে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ সে ইন বেঙ্গলি আই ডোন্ট নো দি আউল রিপ্লাইজ হুট হুট so she says she whispers hello वो बोलती है हेलो रीना हेलो बोले तो वो आबार हुट हुट करेছে okay now we'll answer this question where is Reena now see in the first line second line third line you have to search for the first question first line না হলে second line এ থাকবে দেখো where is Reena এই দেখো Reena is in bed এইটুকু লিখতে হবে did you understand where is Reena Reena is in bed बस आंसर टू द पॉइंट एखे लिखो रीना इज इन बेड वॉट इज शी अफ्रेड ऑफ सी इट इज़ वेरी क्वाइट एंड डार्क रीना इज़ अफ्रेड ऑफ तो वॉट इज़ रिटन हियर वॉट इज शी अफ्रेड ऑफ शी इज़ अफ्रेड ऑफ सी शी इज़ रीना जागाते शी लिखो बिकॉज एखे शी आछे तो यू डो कैनॉट राइट रीना शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क ये देखो
Where is Reena? Reena is in bed. What is she afraid of? She is afraid of dark. Now, what does Reena hear and see? What does she hear? She hears, देखो इकडे আছে. She hears a strange noise and sees two big eyes. She hears, see here it is. She hears strange noise এত অবধি because outside নেই এখানে. So what does Reena hear and see? কি শুনলো? She hears a strange noise. What did she see? She saw two big yellow eyes. She sees two big yellow eyes. Sees will become saw. She saw. What does Reena's mother tell her? Reena's mother, what does she say? It's a, this one she says, it's a baby owl. It's a baby owl. এটা লিখতে হবে না. I think it just wants to say hello to you. Hello to you. You have to say this. You have to write that. Now, is Reena afraid of at the end? No, Reena is not afraid at the end. Ende Reena afraid na ও নিজে গিয়ে hello বলছে. So Reena is not. No, you'll write no. Reena is not afraid in the end. Is Reena afraid in the end? No, Reena is not afraid in the end. Okay, this you do it for your homework and write the words from the text and tell you about in at the night. The night was what? Dark and quiet. The night was dark and quiet. Okay, the night was dark and quiet. See, quiet and dark. The way Reena talks, she was frightened. Scarily. She talks scarily. She talks very frightenedly. Another, she's very frightened. So she's talking very, she's afraid. So she is frightened. Okay. Okay. Now do that homework and show it.